यूपी में एक जगह है जिसका नाम है कसमंडा, बट राइट नाउ आई एम इन मसूरी इन अ प्लेस कॉल्ड द कसमंडा पैलेस। और इसका नाम कसमंडा इसीलिए पड़ा क्योंकि राजा सूरज बख्श सिंह राजा साहब, जिन्होंने 1915 में ब्रिटिश ऑफिसर से ये प्रॉपर्टी खरीदी, ही देन कन्वर्टेड इट इनटू हिज पैलेस एंड आफ्टर हिज ओन ओल्ड जागीर इन यूपी इन्होंने इसका नाम दिया कसमंडा पैलेस। सो चलिए आपको सैर कराते हैं इस हेरिटेज प्रॉपर्टी की, जो जैसे कि मेरे यहाँ लिखे हुए बोर्ड में है 1836 में बनाई गई थी एंड इट वाज मेड बाय कैप्टन रेनी टेलर ऑफ द बंगाल इंजीनियर्स। It is an absolutely beautiful property, and if you are in Mussoorie, it's a property which is certainly not one to miss at all. So come along and let's go and see what the Kasmanda Palace has to offer. तकरीबन 180 साल पुराना ये पैलेस जो है मसूरी के मॉल रोड के बिल्कुल ऊपर है। मैंने ऐसे ऊपर है, इट्स एक्चुअली राइट ऑन टॉप ऑफ द मॉल रोड। मॉल रोड से थोड़ा ऊपर हटके देयर इज अ स्टीप क्लाइंब दैट ब्रिंग्स यू टू दिस पैलेस एंड इट इज लाइक एन ओएसिस ऑफ पीस राइट इन द मिडल ऑफ द हसल बसल ऑफ द मार्केट। ह्यूज स्प्रॉलिंग ग्राउंड्स व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि जैसे आप जानते हैं हिमालय में खास करके पहाड़ी एरियाज में इतनी बड़ी जगह मिलना इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट्स लार्जली फ्लैट लैंड। इट्स मोर लाइक एक प्लेटो के ऊपर कसमंडा पैलेस बना हुआ है, allowing it to have nice step gardens. There is also an open air place for you to have your tea. So really splendid and very, very peaceful place to spend a holiday that takes you back in time. And while it takes you back in time, इन्होंने guests के comfort और लग्जरी के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई है। राइट ऑन द पैलेस ग्राउंड्स आर ब्यूटिफुल स्प्रॉलिंग लॉन्स, बहुत ही खूबसूरत मैनिक्योर्ड गार्डन विच इज ओवरलुकिंग द मेन मॉल रोड एंड मसूरी टाउन। और रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ ओपन एयर सिट आउट है where you can enjoy a cup of coffee and if you're brave enough to actually put up with the cold, तो आप अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड अगेन इट गिव्स यू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ मसूरी टाउन। द बेस्ट पार्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ कसमंडा पैलेस इज दैट आप मसूरी में होने के बावजूद मसूरी की भीड़ और शोर से थोड़ा हटके हैं। और यदि आपको मार्केट जाना हो या मॉल रोड में घूमना हो, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर एनीवन टू कम टू मसूरी, it will take you all of 5 minutes to descend from the hill जहां पर कसमंडा पैलेस है and be right in the midst of all the hustle bustle. So if you're looking for a place that gives you the best of both worlds, जहां आप मसूरी के मार्केट में और उसके हसल बसल में भी रह सके और जब आप थोड़ी शांति चाहें तो वहां से थोड़ा हट के एक शांति से ककून में अपने रह सके, then there is no better bet than the Kasmanda Palace Hotel at Mussoorie. So the Kasmanda Palace has 29 rooms in all, जिसमें से 7 are the royal suites and they are truly royal. But even the other rooms, like the ones that we are staying in, which are the deluxe category rooms, are huge, outstanding heating, very comfortable, and absolute value for money. So let's take a quick tour of the hotel and let's show you what there is on offer. As you go to your rooms, you can't help noticing the erstwhile owners looking down at you from their portraits, hopefully with approval. और दूसरी तरफ आपको दिखेंगे उन्हीं के शिकार किए हुए चीता और तेंदुआ जो अभी भी कांच की आंखों से आपको देख रहे हैं। Of course, hunting is rightfully not allowed now, but वो खैर ज़माना और दौर और था जहाँ पर शिकार करना एक राजकीय शौक माना जाता था। Coming to the rooms, what I like best about any of the palace hotels is कि आप जब कमरे में जाएं तो वहां पर आपको कमरे की छत कम से कम 15 या 20 फीट की हाइट पर मिलती है। एंड कसमंडा पैलेस डज नॉट डिसअपॉइंट इन दैट रिगार्ड। कमरे काफी बड़े हैं। एवरेज रूम का अगर आप साइज देखें तो 450-500 फीट के आसपास है। वुडन फ्लोरिंग, कारपेटिंग डाली हुई है तो आपको ठंड में भी कमरा काफी कोजी मिलेगा। एवरी रूम is equipped with an inverter air conditioner. अब इन्वर्टर एयर कंडीशनर का एडवांटेज ये है कि आपको
ऑयल हीटर या स्टैंड वाले हीटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरे कमरे को आप एक कंफर्टेबल 24 या 25 डिग्री के टेम्परेचर पे रख सकते हैं, which is way better than the 1 or 2 degrees that it's outside during the winters. And then of course there is the classic 4-poster bed, which is something that really works to take you back to a bygone era. सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाथरूम्स को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया गया है. प्लम्बिंग इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, वाटर हीटिंग बहुत ही बेहतरीन है, एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी. सो इफ योर इंटेंशन लाइक अस is to get to a property जो आपको एक पुराने दौर और या पहले के ज़माने के उस ईरा में ले जाए, पर साथ ही साथ आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कंफर्ट दे, and you can't go wrong with the Kasmanda Palace at Mussoorie, because this Welcomheritage hotel really ticks all the boxes as far as the aspect of heritage, comfort and sheer luxury is concerned. So while obviously the rooms and everything else is a reflection of a heritage property, my favorite part of the Kasmanda Palace is in here. This is a beautiful lounge, and the best part is a little message that they put here that says, the resident ghost does not like smoking, drinking or shifting of furniture in this room. Obviously the property is not haunted. ये बस owners का sense of humor है कि आप यहाँ पर तंबाकू या शराब का सेवन नहीं कर सकते, which is perfectly fine, because other than that the room is really very cozy. So you've already heard what I have to say about the Kasmanda Palace, but just don't go by my word, although it is quite credible. Let's speak with someone else who's been staying here for 3 nights, who's very well traveled and who understands what hospitality is all about, and let's see what his opinion is. My very dear and close friend, Mr. Sanjeev Fortness, who Hi Sanjeev. So Sanjeev, you've traveled all over the world in your capacity as founder and director of Total Transport Solutions, which by the way is now a listed company. My question to you is, you've seen all kinds of hotels and properties, resorts, business hotels, city hotels, castles converted to hotels. What is your very honest and considered opinion of your stay here at the Kasmanda Palace? So I had this preconceived notion about palaces in general. You know, whenever you go to a palace, you always think it's a very old property, and what's going to happen with the property? What's the property going to be converted and is going to be made like? I had a completely different picture, but I was very pleasantly surprised when I came over here. Clean rooms, clean bathroom. The first thing that I look in a place is how clean is a bathroom. And in a weather which is very cold right now, do you have a heating system? No. And you have a heating system and it works beautifully. I mean, these are 2 things that I look for whenever I travel. And of course food is a secondary thing for me, but of course the food over here is also fantastic. Great hospitality, great service, very prompt staff. You call them and they're there within seconds. I mean, what more do you need in a beautiful holiday home like this? Super. So here is an opinion from someone who, like I said, has traveled the world. और जब भी मैं अपने मित्रों को ऐसे ट्रिप्स पर लेके जाता हूँ, हमारे एनुअल रोड ट्रिप्स पर, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस यही रहता है कि जगह कैसे होगी, because these are all places which even I have not seen before, and just on a whim we decide चल यार आज या इस हाँ यहाँ पर चलते हैं. So it's always nice to hear your friends coming back and praising a place that you've chosen, and like Sanju said, everything has been updated and made very functional. तो अगर आपको heating का देखना है तो that's very functional. Hot water in the bathrooms, that's very functional. The food is functional. Perfect. Service is great. And if you're coming to Mussoorie for 2 nights, 3 nights, 4 nights, then I think this is a great place to sleep in, because you're very close to the market. It's right on Mall Road, but you're still away from the hustle bustle, as we've already shown you in the video. So that's it from us in this edition of Biplob World. This is part of our India Unseen series. We'll see you in the next video with something else, either to do with climate change or learning about the environment for kids, or maybe exploring a new destination. Don't forget to share this video if you've liked it, and subscribe to our channel for more such awesome content. In the meantime, be good, and we'll see you the next time now. And thank you for a wonderful holiday, Abhishek.
Pleasure's Thank all you. mine.